let's start with chapter number 15, the Indian Constitution. So in this chapter, I will tell you about Indian Constitution. So let's start with the chapter now. First is need of constitution. Why there was a need of constitution? So the term constitution comes from Latin word which means to issue an important law, which was widely denote certain relevant decision. Justice P. N. Bhagwati observed that constitution is a document of social relevance. ठीक है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक सोशल डॉक्यूमेंट है सोशल रेलेवेंस का. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल दोज हु आर लिविंग टुगेदर, जो एक साथ रह रहे हैं. एंड दे आर कंसर्न विद टू प्रॉब्लम, द रिलेशन विद डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन. मोर देन एनीथिंग एल्स, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोलिंग the abuse of power by the government. That is why ये कहा भी जाता है कि constitution क्या है, कि important document है. Now making of constitution. So the Constitution of India was framed by Constituent Assembly, which was the illustration of the son of the soil, like Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Sardar Patel, Dr. Rajendra Prasad, Maulana Nehru, Sardar Vallabh Singh, Rajendra Prasad. They are the elected chairman, and Dr. B.R. Ambedkar is a messiah of Dalits as the chairman of drafting committee. ये क्या थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन November 26, 1949. थ्रू इट वाज इट इम्प्लीमेंटेड ऑन January 26, 1950. यहाँ पे आपके 11 सेशन रन हुए, राइट? इन हाउ मेनी डेज? In 165 days, out of which 1/4 days were devoted to the consideration. मतलब जो ड्राफ्ट कर हमने कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए हमने रखा. सो द टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स जो हुए वो थे आपके 7635 आउट ऑफ 2973. इसमें से जो आपके 7635 अमेंडमेंट्स थे उसमें से खाली 2973 अमेंडमेंट्स मूव कर. It took the assembly 2 years, 11 months and 20 days. And official copies of constitution was signed by the colorful ceremony of the constitution, जो आपके इफेक्ट में आया कब से? January 26, 1950. And the constitution represent Indian cherished goal and ushering an era of liberty, equality and justice. Liberty, equality and justice. Its democratic idol led the leading Democrats to hail as a glorious chapter in the history of men's, which march on the highway of the progress and prosperity. Now purpose served by the constitution. क्या purpose serve करा constitution ने? तो constitution served as several purposes. First, इसने एक degree of trust और coordination बनाई, ठीक है, जो necessary है. And second, in spite how the government will constitute, who will be in power to take decision. And third, it lays down limits on the power of the government and tells what the rights of the citizen are. और बताता है कि citizen के rights क्या हैं. Then we have constitutive principles or rules. So we know that each game has rule according to which it is played. So each of these helps to define game. ये game define करते हैं and helps to distinguish one game and another, जिसको हम constitutive rules of game कहते हैं. Same way society also has constitutive rules, जो क्या बनाती है, इसको differentiate बनाती है in form of other kind of society. So we can say that these consensus is usually available in written form. जो आपका constitution है वो आपको किस फॉर्म में मिला है? written form. All the countries have constitution and are not necessarily democratic, but the countries that are democratic, जो country क्या है, democratic है, they will have constitution and they adopted democratic form of government. जैसा आपको पता होगा कि जो क्लास मॉनिटर होता है वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है. सिमिलरली जो मिनिस्टर्स होते हैं दे में यूज हिज पावर और अथॉरिटी इन टेररिटाइजिंग हिज अपोजिशन पार्टी. ठीक है, अपने अथॉरिटी को यूज कर सकता है और चाहता है अपने अपोजिशन पार्टी को क्या करना? टेरराइजिंग करना. लॉट ऑफ ही कैन अर्न लॉट ऑफ मनी थ्रू करप्ट मीन्स. इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ्टन लेज डाउन द रूल्स दैट गार्ड्स अगेंस्ट द misuse of power by our political elite. In case of Indian Constitution, many of these rules or laws are contained in the section of fundamental right. And the Indian Constitution guarantees right to equality. जो Indian Constitution है वो आपका right to equality देता है सब person, right? We all know that
Majority of students in class may have decision of playing certain game on the rest. Similarly, in a democracy, a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interests. This can be inter-community domination and कम जो एक community है वो dominate कर रही है कौन सी पे दूसरी community पे. So the constitution usually contain rules which ensure that minorities are not excluded. जो minorities हैं वो excluded नहीं. Right? So sometimes many people in democracy might be bored of the political party, जिससे क्या होता है disruption होता है laws का, order का. और what they demand, वो क्या डिमांड करते हैं? Strong dictator, जिससे वो क्या कर सकते हैं? Laws को, rules को enforce कर सकते हैं. Right? So a good constitution does not allow such whims to change the basic structure. अगर constitution अच्छा है तो basic structure में किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं करेगा. Right? So we can say that constitution has a vital role. What it's determine? Authority and legitimacy of the law. Next is constitution reflects the ideals of the country. So in 1934, Indian National Congress demand constitution assembly. So in the early 1940s, जो assertion था किसका? Independent Constituent Assembly का. It was formed only of Indians gained momentum and it was convened in December 1946. और जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे, व्हाट हैपेंड, दे अप्रोच्ड द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया विद ग्रेट आइडियलिज्म दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड टू प्रोड्यूस. सो अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. प्रीवियसली नेपाल वाज मोनार्की. पहले क्या था? जो नेपाल था वो मोनार्की था एंड प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल अडॉप्टेड इन 1990. And what it's reflected? It's reflected the fact that जो final authority होगी, ठीक है, जो हमारी final authority होगी वो किसके हाथ में होगी? King के हाथ. But constitution, because it does not reflect the ideals of country that they want Nepal to be, so in 2006 जो people थे नेपाल के, they finally succeeded in putting an end to the power of the king. And what happened? Nepal changed all its constitutive rules in order to move from monarchy to a democracy. How was Indian Constitution written? Around 300 members. देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई. बेसिकली उसमें 3 मेंबर थे, सॉरी देयर वर 300 मेंबर एंड दे मीट 3 ईयर फ्रॉम दिसंबर. डिफरेंट सेशन होते थे फ्रॉम दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949. And Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee after drafting each provision of the discussed in the great detail. Now there was an extraordinary sense of unity felt among the member of the Constitution Assembly. So what happened under the British? जो people थे इंडिया के, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. So what happened? जो long pains थे under the authoritarian rule of the colonial state convinced India that free India should be democracy, जिसमें हर एक इंसान को हमें क्या करना है? Equally treat करना. So the immediate problem and the future vision both were before the member of Constitutional Assembly. Migration of refugees. देखो जो refugees थे वो migrate कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था? partition हो रहा था. Undecided principles led dismiss of social economic condition of the vast mass of people. And जो Constituent Assembly थी, they gave India a visionary document that emphasizes the role of people in choosing their representative. और ये किसको रिफ्लेक्ट करता है? And reflects our respect for maintaining diversity while preserving national unity and concern of erecting property through socio-economic reform. Now preamble. Our constitution begins with preface or introduction called preamble. ये highlights करता है goal and aspiration of Indian people, right? So preamble का जो objective है वो क्या है? Original preamble states India to be sovereign, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. सो इन 1976 42nd अमेंडमेंट ने किसको ऐड करा? एक तो सोशलिस्ट को और एक सेकुलर को. नाउ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. और हम क्या करेंगे? अपने सारे सिटीजन्स को सिक्योर करेंगे. जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल
जस्टिस सोशल होगा, इकोनॉमिक होगा, पॉलिटिकल होगा, वही लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, राइट. एंड in our constitution assembly 26th day of November 1949 do Harami adopt, enact and give to ourselves this constitution. So what are the main principle? Let's talk about the main principle. First principle is your sovereign. It means that India has its own defined territory and own government. अपनी defined territory है, अपनी ही government है. No any external power rule state and has authority, power and capacity to enter in relation with other sovereign state, right? Then we have socialist. Everyone is given equal opportunity to make use of resources of the country. It was hoped that this would narrow and divide the rich and poor. मतलब एक ही divide लेके आएगा rich और poor के बीच में. Then we have secular, means all religion, कोई भी religion हो सबको आपको equally treat करना है with equal respect. आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आपको किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना. नाउ डेमोक्रेसी, ओपनिंग पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड इट्स कंक्लूडिंग पार्ट, वी टू आवरसेल्फ क्लियरली इंडिकेट दैट वी हैव डेमोक्रेटिक स्किल. सो द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्टेड देयर गवर्नमेंट एट द सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल. देन वी हैव रिपब्लिक. रिपब्लिक क्या एक पॉलिटिकल ऑर्डर है इन विच जो सुप्रीम पावर है वो किसके हाथ में लाई करते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया. And when do we become republic? On 26 January 1950 when our constitution officially came into force. और हमारे हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट. इज इलेक्टेड फॉर 5 years और वो हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होती. देन वी हैव जस्टिस, मींस फेयर एंड मॉडल ट्रीटमेंट. सब पर्सन को फेयर और मॉडल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. मेकिंग एंड द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ. इट इन्वॉल्व्स दैट रिवार्ड्स फॉर राइट्स एंड एक्ट पनिशमेंट फॉर डिवास्टिंग, डिबेटिंग फॉर एंड प्रीएम्बल कॉल्स फॉर सोशल, पॉलिटिकल and economic justice. If we talk about liberty, means liberty is right from Latin word liber. जिसका means है freedom from slavery, right? Imprisonment, and it is the essence of democracy. ये क्या है? Democracy का essence. Equality, all citizens are considered equal before law and all kinds of discrimination are demanded. चाहे वो illegal हो and therefore if they are punishable by law. Now key features. Let's study about the key features of Indian Constitution. First is federalism. So belief in or support for a federal system. A federal country or a system of a government consists of group of state. जो क्या करता है? अफेयर्स को कंट्रोल करता है and with a single national government, which makes decision on the national concern, जैसे फॉरेन अफेयर हो गए, डिफेंस हो गए. और जो फेडरलिज्म है, it refers to the existence of more than one level of government. We have government at state level, central level, और पंचायती राज वो क्या है आपका? थर्ड टायर भी होता है. एंड इट लिस्ट डिटेल्स ऑफ द इशूज. हर एक टायर होता है अपने अपने इशूज बताता है. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाई देयर ईच टायर गवर्नमेंट एंड कैन गेट मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो अंडर फेडरलिज्म स्टेट्स आर नॉट merely एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, बट व्हाट दे डू, दे ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. ठीक है, वो भी अपनी अथॉरिटी कहाँ से ड्रॉ करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से. द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इंडिया meant that a system of government need to be devised which did not involve only person sitting in a national capital or making decision for everyone. Next is parliamentary form of government. Next feature, that is parliamentary. So the member of the Constitutional Assembly felt that freedom struggle had prepared masses for universal adult suffrage. And it would help to increase democratic mindset. और जो clutches थे ना मतलब ट्रेडिशन, कास्ट, जेंडर के उसको तोड़ देगा. It means that people of India have a direct role in electing their representative, which is a form of parliament. अब जो ये प्रिंसिपल है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, it was adopted with the abundant faith in the concern of men. And ultimate success of democratic rule and full of beliefs, and we can say that it the standard of living, comfort, ये well-being promote करता है and एक decent living of common man. Now separation of power. We have 3 levels, ठीक है? Executive, legislature, जो law बनाता है, executive जो execute करता है, judiciary जो न्याय दिलवाता है. So we have 3 organs, 3 branches, legislature, executive.
लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? लॉस इंप्लीमेंट करने के, एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिशरी, इट रेफर्स टू द कोर्ट, जैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास पावर होती है टू लुक आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। देन वी हैव फंडामेंटल राइट्स, it protects citizen against arbitrary but not fixed or absolute exercise of power as well as other individuals. So the object of the fundamental right is twofold. The first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights. देखिए हर एक इंसान उस पोजीशन में होना चाहिए कि राइट्स को क्लेम कर सके. Now fundamental rights are called conscience of constitution. Then we have secularism, means if the one state does not officially promote any one will. जो किसी एक, then we have fundamental right. The constitution provide fundamental right to the citizen of India. एक important role play करता है, right? Right, we have, it comes in the part 4 and we have 6 right. First is right to equality, right? In this we have equality before law. Constitution ensures that all persons equality before the law or equal protection of the law within the territory. No law can discriminate unfairly between one group of citizens and another regarding the same matter or between the citizen and foreigner. Social equality, constitution does not permit discrimination against any citizen, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, रेस के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, सेक्स के, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी. सो द गवर्नमेंट मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, एक स्पेशल प्रोविजन बनाती है एंड इट इज मेड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन. Right? Now abolition of untouchability. What happened? Parliament passed an Untouchability Offences Act and enumerated elaborately offence on the grounds of untouchability and suggest punishment. आपको एक तो imprisonment है 6 महीने का और आपको फाइन देना पड़ेगा 500 रुपये. Right? Now abolition of title. So the constitution does not permit conferring the title except military or academic. जैसे title of खान बहादुर और राय बहादुर which were conferred by the British, usually on the British loyalty, they were abolished. And the awards of Bharat Ratna, Padma Vibhushan or Padma Shri, they do not come with the constitution prohibition. Besides, no citizen of India can accept any title from the foreign state. तो अगर कोई foreign state आपको title देते तो आप accept नहीं कर सकते. Next is right to freedom. Now freedom is very essence of democratic government. It is a palladium of individual liberty and it ensures certain fundamental freedoms. Right to freedom of speech and expression, right to assemble peacefully. आपको assemble करना है peacefully without any harm. Right to form union association, right to move freely through territory of India, right to reside and settle, right to acquire and hold and dispose of property, right to practice any profession. So these freedom are not unabridged and the government can impose restriction in the interest of independence. लेकिन अगर कोई public order है then your right can be restricted. So right of freedom also include right to personal liberty. No one can be given a punishment that is more than what law permits. आप उससे ज़्यादा punishment नहीं दे सकते इतनी law ने permit करी. No citizen can be deprived of life and liberty except violation of some law. No person accused of any offence shall be compared with the witness against himself, like Menka Gandhi versus Union of Indian case. Article 21 is a Magna Carta protection of life and liberty भी बोला जाता है. No person who is arrested shall be detained custody without being informed on the grounds of arrest. पहले आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्यों उसको अरेस्ट कर, उसके बाद ही हम अरेस्ट कर सकते हैं. और आपको उसको विद इन 24 आवर्स आपको करना है नियर बाय मजिस्ट्रेट में उसको प्रोड्यूस करना. नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिसअलाउ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड बैगर एंड सिमिलरली फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर. सो बैगर मतलब क्या होता है? पर्सन वर्क अगेंस्ट हिज विल एंड टू विदाउट विल. भाई एक तो अपने विल के इच्छा के अनुसार काम कर रहा है, ऊपर से बिना पैसे कर रहा है, तो उसको हम बेगर करते हैं. Compulsory service may be imposed for public purpose, for instance, compulsory military training and military and industrial conscription. So the constitution lays down that no child below the age of 14 shall be employed to work in any factory or mine or engaged in a hazardous employment. Now right to freedom of religion. Now through the preamble of constitution we have resolved to establish a secular polity in India.
And the right to freedom of religion is a step towards the direction. So the constitution guaranteed to every citizen freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate. And no compulsion of payment of taxes. मतलब कोई religious domination के लिए कोई compulsion नहीं है कि आपको taxes pay करने ही करने. No religious instruction on institution maintained by the state. The right to freedom of religion clearly क्या करेगा, ये effect करेगा. अब भाई अगर आप अपने laws रखने लगोगे तो वो क्या करेगा, right to freedom को effect करेगा, and it is not debarred from adopting reformatory measures and imposing restraint. And you can abuse of religious freedom with danger, public order, morality or health. Now cultural and educational right. So India is considered as an adobe of variety cultures, different religion. People of India speak different language और हम different क्या scripts का use करते हैं. So the constitution protects the cultural and educational right of minority. एंड जो आपका आर्टिकल 29 है, ऑल सेक्शन ऑफ पीपल जो किसी पार्ट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं उनकी अपनी क्या होगी, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होगी, स्प्लिट होगी, कल्चर होगा, एंड नोबडी विल डिसअलाउ, कोई भी डिसअलाउ नहीं करेगा एडमिशन. भाई होता है ना कि आप इस रिलीजन के हम एडमिशन, तो ऐसा नहीं करते. ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन लैंग्वेज पोजेस द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन. आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो अपने चॉइस का. Now right to constitutional remedies. The constitution also guarantees them against any encroachment on their fundamental rights by incorporating right to constitutional remedy. So these remedies entitles the citizen to move to the Supreme Court. आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, कोई और अदर कोर्ट भी जा सकते हो, जैसे हाई कोर्ट हो गया, where you can issue your writs. Right? We have different writs, that is your habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and Kyoto warrant. These are the different writs. Now the right of constitutional remedy was very important. Exception when an emergency is declared, right can be suspended. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके इन राइट्स को क्या कर सकती है, सस्पेंड भी कर सकती है. राइट. सो देन वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज. मतलब भाई अब हमारे को इतने सारे राइट हो तो हमारी कुछ ड्यूटी भी है अपने कंट्री के टुवर्ड्स. सो व्हाट आर द ड्यूटीज? टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट. आपको जितने भी आइडियल्स है, इंस्टीट्यूशन है, नेशनल फ्लैग है, उनको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है. टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. You can defend country and render national service. To promote harmony and spirit of common brotherhood. ठीक है, आपको मतलब वही है ना, religious discrimination नहीं करना है. To value and preserve the rich heritage of our country. To protect and improve natural environment, चाहे वो forest हो, lakes हो, rivers हो, wildlife हो, इनको क्या करना है, protect करना. To develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry. To safeguard public property. To strive towards excellence in all spheres, individual and collective activity, so that nation constantly rise to the higher level of endeavor and achievement. Who is parent or guardian? To provide opportunity for education. So, by the adding 86th amendment in 2002, it was brought in the force. Now, utility of fundamental duty. पहली बात तो ये नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, मतलब जो पॉलिटिशियंस है वो डिफरेंट व्यूज देते हैं अपने यूटिलिटी पे, एंड दे आर बेस्ट इंटरेस्ट, दे आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. नाउ आइडियल एंड प्रोवाइड गाइडेंस. ये एक नेचर होता है, इनका आइडियल नेचर होता है, और ये सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करता है, राइट डायरेक्शन. इन्वायरमेंट ऑफ सेल्फलेसनेस इज रैम्पेंट इन द कंट्री. फंडामेंटल ड्यूटीज को सर्व एज एन आइडियल बिहेवियर. नेक्स्ट इज योर कॉज ऑफ पब्लिक अवेकनिंग. ये फुलफिलमेंट करता है फंडामेंटल राइट्स को और लोगों को जगाता है, जागरूक करता है कि आप क्या करें और कि आप धीरे धीरे अपनी ड्यूटीज को फॉलो करें. एफर्ट्स मेड फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज टू रियलाइज देयर राइट. सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रिस्क्राइब्ड मेनी सेफगार्ड्स फॉर एससी एंड एसटी. इन द फर्स्ट प्लेस आर्टिकल 17 जो आपको अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है, इट वाज abolished and cannot be practiced in any form of hotel. No person can be deprived of use of shops, hotels, public entertainment, ponds, well on grounds of only of religion, caste, creed and place of birth. According to Article 46. तो Article 46 के हिसाब से no bar for admission to government aided educational institution. ठीक है, on the ground of religion. Now what are the effects made by the government? पहला क्या था कि इन्होंने ट्राइबल
एडवाइजरी काउंसिल खोली जिसमें डिफरेंट स्टेट्स डिपार्टमेंट से एंड स्पेशल ऑफिसर्स एट द सेंटर टू प्रमोट वेलफेयर, और लोगों के सेफगार्ड कर सकते हैं ट्रस्ट. Reserving the appointment and promotion in public services under this provision, 15% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए था और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए था. राइट नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स इन लोकसभा एंड शेड्यूल्स. मतलब 78 थी एससीज के लिए और 30 थी एसटी के लिए. Adequate representation of SC and ST in reserving seat to ensure adequate representation for weaker section. Services several, जैसे आपको relaxation मिल गया, fees, qualification, pre-examination की fees माफ कर दी, तो different things has been given. So the union government has set up 2 central advisory. एक तो आपका tribal welfare, Harijan welfare, and the state government have also set up welfare department जिससे आप overall development को monitor कर सकते हैं. So in 1990s, 27% reservation in public service for backward caste has been done. Constitution or living document. So Indian Constitution has been changed over years to reflect new concerns of the polity. देखो बहुत सालों में ये बहुत चेंज हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुकी है. Whenever required, Constitution has been adapted for the changing situation. और उस changing situation को क्या बोला जाता है? Procedure of amendment. This position of Constitution has been the source of all laws and policy, and Constitution is the fundamental law. And what it's provide the fundamental law of government. Now, need for law. Law is a set of rules and regulations which are recognized by the society and enforced by the state. And the executive has responsibility for implementing law. And rule of law is the foundation of any democracy. So no person, regardless of his or caste, class, religion, race, status, or work, and the government cannot discriminate between ordinary citizen, rich person, political leader, senior government officer. For example, if I talk about the practice of dowry, पहले क्या था, बहुत prevalent था in our society. Dowry is the name of gifts or things to help the newlywed girl and husband. So over the year, many in-laws of the girl, out of greed, demanded more money in cash, costly gift for her parents. Some parents of the girls get heavy dowry and showing their prestige in society, and it has caused immense hardship. भाई जो लोग नहीं दे सकते, जो गरीब हैं, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है. आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर. So government passed Dowry Prohibition Act in 1961 और it makes taking and giving dowry a crime. आप dowry दे रहे हो या फिर ले रहे हो तो वो एक तरीके का क्या है, क्राइम है. Later amendments make the punishment more severe in case of dowry, death of the bride owing to harassment or dowry. Guilty person shall be punished imprisonment term of 7 years. 7 साल से. Next is laws and dissent. All laws made by the legislature have to be followed. It is a fundamental duty. ये हमारी fundamental duty है. And British Governor General and Viceroy often impose law without taking a notice of missing. So even though legislature is chosen by the people, it does not mean that all law passed it are always just and fair. ऐसा नहीं कि जितने भी laws उन्होंने pass करे वो just and fair है, वो लोगों के interest में. So when a section of society or a whole society express disagreement with law through actions and words, इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट कहते हैं. So defiance of the salt law in 1930 by Gandhi ji and his followers was followed by rise of mass movement जिसको हम civil disobedience movement कहते हैं. The aim was to violate unjust policy of the British law. Gandhi ji said that, Gandhi ji कहते हैं salty water of the sea belong to the nature on which no government has a sole right, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट के पास अपना सोल राइट नहीं है. So even in independent India, people express discontent regarding certain order. For example, जैसे higher tax impose करे गए, right? Budget में जो rate of electricity या railway fare है वो increase हुआ, right? Almost all the states in India give license to different localities to sell liquor. The women in villages found that their money earned by the day-long hard work is wasted in buying, and the women united against their husband, liquor mafia, and the government which issued the license. Now, current efforts by the marginalized community to realize their rights.
देखो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं दे आर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी, दैट इज अदर बैकवर्ड कास्ट्स। ये क्या करते हैं, इनको मार्जिनलाइज कम्युनिटीज कहते हैं। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेटेड दैट law might exist and the marginalized community still had a reason to fear because administration of these law were in the hand of caste society officers. So Indian constitution, while it was guaranteeing the right to equality to all citizens, has made special provision for upliftment of marginalized community, right? So for the betterment we have taken some steps which include reservation of seats in the parliament, state legislature and local government, reservation of seats in educational institution, provision of scholarship and grants, launching vocational training courses in tribal areas, special training and coaching program for competitive exam, reservation for government jobs, 15% for scheduled caste, 7.5 for scheduled tribe and 27% for OBCs. Right, this is all about in this chapter. Hope you understood. Now we will do the exercise. Now first is tick the correct option. Constitution is a set of rules and written. Next is fundamental right are, now fundamental right are dash of constitution. Third, who wrote Indian constitution? किसने लिखा था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन? It was written by Dr. B.R. Ambedkar. Constitution reflect the ideals of state, city और country. किसके ideals को reflect करता है? That is country. The Indian Constitution was framed by Constituent Assembly. When was Indian Constitution passed? It was passed on 26 November 1949. Now fill in the blanks. The Constitution Assembly formally passed the Indian Constitution on 26 November 1949. The preamble of the Constitution begins with "We the all the citizens above the 18 are eligible to vote. The fundamental duties were incorporated in our constitution by the dash. The fundamental duties were incorporated in our constitution by the dash passing in 1970. 42nd Amendment. 40. Now rich heritage of a nation. जो rich heritage है आपके nation का, it should be preserved and protected. The dash aim at the people welfare. Preamble. Now match the following. Indian Constitution, Pandit Nehru. Preamble. Now write T for true and false, F for false statement. Constitution cannot be amended because it is a supreme law of country. False. Parliament इसको amend कर सकता है. The preamble is the soul of constitution. It's true. Next is constitution reflects the ideals of the country. It's true. A country that has a constitution must be a democracy. False. जो डेमोक्रेसी है वहां पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा.
Member of Constitutional Assembly of India has the same view on all the provision of the constitution. False. A constitution is a set of basic rule. It's true. Now answer the following. What is the need for law? भाई law की हमें क्यों need पड़ती है? To maintain the order in the country. How are the powers? आपको तीनों power legislative, executive and judicial लिखनी है. What are fundamental rights और वो क्यों necessary है ये आपको बताना. आपको key features बताने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. Now what are the constitutive principle of rules? Discuss the preamble. How was Indian constitution written? और ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है आइडियल्स ऑफ द कंट्री को. व्हाट इज फेडरलिज्म, पर्पस क्या है, टू बी सर्व्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, एंड व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों नीड पड़ती है, दैट यू हैव टू डू. राइट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, होप यू अंडरस्टूड. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.